हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैकेनिक्स का। रादर हम लोग बोल सकते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स, दैट इज लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज दिस लैमीज थ्योरम? लैमीज थ्योरम क्या है, ये हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। सो लैमीज थ्योरम क्या बोल रहा है कि व्हेन थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, then one force is proportional to the other force. That is क्या है कि then the one force is proportional to the sine of angle between the other two forces. Okay, तो इसको हम लोग लैमिस थ्योरम बोलते हैं। that what लैमिस थ्योरम is telling that कि when three forces acting at a point are in equilibrium, then one force is proportional to the sine of angle between the other two forces. Okay, this is Lami's theorem. अब इसको अगर हम लोग एक डायग्राम से समझे तो इट विल बी मच मोर इजियर। तो लेट मी शेयर अ स्क्रीन। चलो हम लोग का स्क्रीन शेयर हो गया। यहाँ पे अभी हम लोग को समझना है। तो क्या है कि सपोज टॉकिंग अबाउट द थ्री फोर्सेस, सपोज दिस इज वन फोर्स, is one force, rather इसका draw करते हैं। So this is one force which is acting in this direction। सपोज ये मान लो दूसरा फोर्स हो गया जो कि इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और मान लेते हैं कि ये एक और फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। सपोज सो लेट मी नेम द फोर्सेस। मान लो ये फोर्स हो गया हमारा F1, ये फोर्स हो गया F2, और ये फोर्स हो गया F3। तो मान लेते हैं कि F1 और F2 के बीच में एंगल है अल्फा, F2 और F3 के बीच में एंगल है बीटा, और F3 F1 के बीच में एंगल है, मान लेते हैं हम लोग, गामा। ओके, सो F1 F2 के बीच में एंगल अल्फा है, F2 F3 के बीच में एंगल बीटा है, और F3 F1 के बीच में एंगल गामा है। तो what the Lami's theorem is telling that any force that F1 by sine of F1 के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? बीटा है, तो साइन बीटा, F1 by sin बीटा विल बी इक्वल टू F2 by F2 के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? गामा है, साइन गामा इक्वल्स टू F3 by F3 के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा? अल्फा, साइन अल्फा। सो दिस इज व्हाट लैमिस थ्योरम इज टेलिंग। लैमिस थ्योरम यही बोलता है कि इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, ये सिंगल पॉइंट में तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली दिस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इफ दिस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन the each and every force is equal to the sine of angle between the other two forces, that is F1 by sine of beta, क्योंकि साइन बीटा, बीटा क्या है? F2 और F3 के बीच का एंगल है। सिमिलरली F1 by beta equals sin beta equals to F2 by sin gamma equals to F3 by sin alpha। ये हो गया हम लोग का लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम। अभी इसके ऊपर इसको अप्लाई करके हम लोग डायनामिक्स का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिक्स का कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। Right? तो भी फर्स्ट, बिफोर गोइंग टू द प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स, हम लोग तो हम लोग कुछ लैमिस थ्योरम, अप्लाइंग लैमिस थ्योरम वी विल डू सम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स। हाँ, जैसे कि एक न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसा है कि
suppose this is a suppose rod, और यहाँ से मान लेते हैं कि दो स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं कुछ इस तरह। और वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि they have given the problem they have given is this angle is theta and this angle is also theta. Now they have asked to find the tension on the strings. So they obviously there is a tension of the strings. यहाँ पे tension काम कर रहा है T. Now if there is an object of mass m, then the weight will act downwards mg. Now if this angle is theta and this angle is theta, then this is T, and T can be resolved into this particular fashion that T का एक डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो T will be T का component आएगा, this is T sine theta, and one component will act this side, this will be T cos theta, T cos theta ऊपर की तरफ काम करेगा because this is theta. Similarly we will get T sine theta in this side and another T cos theta upward, so it will be basically 2T cos theta, so it will become 2T cos theta. अभी 2T cos theta जो है वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, which is balancing mg, और T sin theta जो है, see this T sin theta and T sin theta are acting opposite to each other, which is actually neutralizing each other. So now the whole system is in equilibrium. If the whole system is in equilibrium now अभी क्या है कि हम लोग क्या है कि if this angle is theta, then definitely this angle will be 180 minus theta, and so same thing is for this will be 180 minus theta. Okay, now this what I am getting that अगर ये force T है, ये force T है और ये नीचे force mg है, so see if this is if I consider this T force, then T by opposite sine of the opposite angle, तो इस T का opposite में कौन सा एंगल है 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू ये टी को अगर हम लोग कंसीडर करें दिस टी, तो इस टी के ऑपोजिट वाला एंगल भी 180 माइनस थीटा ही है, तो दिस टी बाय साइन 180 minus theta again. Now this will be equal to तो इक्वल क्या करेगा mg is the force, mg by इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है थीटा, एंड थीटा इज 2 थीटा, तो इट विल बी साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग को टी निकालना है, तो टी बाई साइन 180 माइनस थीटा, तो हम लोग को पता है कि साइन 180 माइनस थीटा मीन्स इट विल बी साइन पॉजिटिव, एंड सिंस इट्स अ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा साइन का एंगल साइन 180 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा ओनली, सो इट विल बी टी बाई साइन थीटा इक्वल्स टू mg by sine 2 theta. So T will be mg
साइन थीटा बाई साइन 2 थीटा। तो यहाँ से t विल बी व्हाट, mg साइन थीटा बाई साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा। तो साइन थीटा गेटिंग कैंसल आउट, यहाँ से I will get t equals to mg by 2 cos theta. So this will be my required for tension on the strings. T will be mg by 2 cos theta. Now this is one of the example of Lami's theorem. So this is how we can calculate tension on the strings by this particular technique. Now let us discuss one more problem. Suppose I have a pivoting here. Suppose this is point A from here. But certain distance cannot be. I have another point B, and is from point A and point B, a string is attached. Particular way. This is how the string is attached. But इस string के साथ इस point पे suppose you have a ball attached. Suppose मान लेते हैं कि यहाँ पे बॉल है, ये बॉल जो है इस पॉइंट पे अटैच्ड है. ओके, so इस बॉल, if the mass of the ball is 30 kg and they have asked something that the given problem is if I draw a tangent over here and a line, so this angle is 45 degree, this angle is 30 degree, this is point C, and the mass of this object, this weight is acting out, the mass is 30 kg. Now they have asked to find out T, the tension on this string. दोनों ही strings में, दोनों part में या दोनों ही strings में tension same ही होगा because it is hanging a single object. So if the mass of this ball is 30 kg, then weight of the ball, weight of the ball वो क्या होगा, mg, that is 30 into 9.8 Newton. Okay, so we will get some values. Let's say it will be 294 Newton. Okay. Now 294 जो है, the weight which is acting downward is 294 Newton, which is the weight acting downward, mg. Okay. Now this angle is 30 degree, this angle is 45 degree, और this is the point C. ये एंगल मुझे पता नहीं. फाइन. तो इसका अगर हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, if we draw FBD, free body diagram, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कैसा आएगा. सपोज दिस इज द पॉइंट and a force is acting in this particular direction, a force is acting in this particular direction, and a force is acting downward जो force काम कर रही है mg. now यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं. okay, now this is 30 degree according to the given diagram of problem. 45 degree, अगर ये 45 डिग्री होता है
और ये 30 डिग्री होता है, so let's find out कि ये कितना होगा. It's very easy to find out because since the total is 180 degree, then eventually this will be 105 degree. This will be 105 degree. Now we know that ये पूरा जो, okay, so now this is 105 degree. Now it can be very easily calculated कि ये अगर 105 डिग्री होता है तो this much, this angle will be 120 degree. It's a simple geometry. And ये अगर 120 डिग्री होता है तो ये 45 डिग्री है, so it will be 135 डिग्री. तो हम लोग को सारा एंगल मिल गया. ये टेंशन टी है, इधर भी टेंशन टी और ये एम जी है. एम जी के ऑपोजिट वाला एंगल है 105 डिग्री, ये टी के ऑपोजिट वाला एंगल है 135 डिग्री और ये टी के ऑपोजिट वाला एंगल है 120 डिग्री. तो वी गॉट ऑल द एंगल्स. जस्ट नथिंग बट इट्स एडिशन विद 90, क्योंकि यहाँ से इतना 90 है, ये 45 है, इट विल बी 135. यहाँ पे ये 30 है और ये 90 है, इट विल बी 120. और ये पूरा 180 है, तो 180 से अगर हम 75 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 115. सॉरी, I made something wrong here. It will be 115 degree leads. I'm sorry, it will be 105 degree only. हाँ सही है. तो हम लोग को सारा एंगल्स भी मिल गया. नाउ तो अप्लाइंग लैमिस थ्योरम हम लोग को क्या आएगा देन, टी बाई, अगर मान लो इस टी को पकड़ते हैं तो इसका ऑपोजिट वाला एंगल है 135 डिग्री, तो साइन ऑफ 135 डिग्री इक्वल्स टू ये वाला टी है, तो टी बाई साइन ऑफ, इसका ऑपोजिट वाला एंगल है 120 डिग्री इक्वल्स टू एम जी बाई 10, एम जी बाई साइन ऑफ 105 डिग्री, साइन ऑफ 105 डिग्री. नाउ हम लोग को सिर्फ टेंशन निकालना है. सो इफ आई यूज दिस पार्ट ऑफ द इक्वेशन, इतना ही अगर इक्वेशन का इतना पार्ट अगर हम यूज करेंगे तो भी हम लोगों का काम चल जाएगा. सो P विल बी एम जी साइन 120 बाई साइन 105 डिग्री. It will be mg is 294 into sine of 120 degree, it is √3/2. होता है ना, साइन 2 थीटा साइन 60, तो 2 into साइन 60 into cos 60. So eventually you can get the cos 60 हाफ होता है, साइन 60 √3/2. So 2 into हाफ कैंसिल आउट, तो √3/2. और साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री मतलब हो सकता है हम लोग का साइन 90 plus 45. So it's since it's 90 plus 45, अभी हम लोग समझ सकते हैं कि 105 degree is angle which is less than 180 degree, and it comes 105 degree falls in the second quadrant. So the sign will be, the sign will be always positive. And sine of 90 plus 45, so it's, since it's a odd multiple of pi by 2, so for that reason यहाँ पे हम लोगों का साइन को एंगल चेंज हो गई, cos हो जाएगा, so it will be cos 45. So cos 45 is 1/√2, so it will be 1/√2 rather. Now if we calculate this whole thing, we'll get our answer will be 294 into √3 by 2 into √2. This much Newton will, we will get the answer. अभी यहाँ पे हम लोग 294 can be cancelled out. It will be 2 on the 2, 2 4 8, so 147. So it will be 147.6 Newton. This will be our answer. तो हम लोगों ने क्या सीखा कि दिस इज हाउ बाय एप्लीकेशन ऑफ लैमिस थ्योरम हम लोग इफ three points, if three forces acting at a single point is in equilibrium, then using Lami's theorem हम लोग कोई भी फोर्स का वैल्यू कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं. दिस इज द
application of Lami's theorem. This was my discussion. And stopping this here. तो Lami's theorem यही था और यही Lami's theorem का application था. We will catch it in the next particular video with some new interesting topics.